नरेश अग्रवाल जी। माननीय सभापति जी, आई विल कॉल यू आल्सो। संवैधानिक व्यवस्था के तहत संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस सदन में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। मंत्र परिषद उनका नाम भेजती है, महामहिम राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करते हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिए इस सदन में ये व्यवस्था करी गई है। यहाँ लोग नॉमिनेट हुए, श्रीमान हम लोग तरस रहे हैं उनको देखने के लिए, वो आते ही नहीं है। पिछले में कई सदनों से पूरा सत्र चला गया उनका, चाहे हमारे क्रिकेट के तेंदुलकर हो, चाहे फिल्म, चाहे और कोई हो। श्रीमान ये तो दैट इज नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। अगर उनको है अब वो नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि उनकी कोई रुचि नहीं है। अगर रुचि नहीं है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। और लोग आए जो, लेकिन वो नहीं अगर आ रहे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, दैट इज नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नहीं, क्यों नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? ये संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में दिया है। यू सी संविधान। ओके हाँ वो बताइए। It is up to them to decide. It is not point of order, it is point of disorder. That is point of disorder. See, you can, नरेश जी, अपने दीदार तो okay, नरेश जी, you can use your good offices with them. See, you can use your good offices with them and request them to be present in the house at least for a few days whenever possible. चिट्ठी लिख दूं? आप लिखिए। Now, Digvijay Singh ji, what's your point of order? I very serious. I will allow you. After that, I'll take it. No, yours is point of order. That is not point of order. Thank you, sir. Sir, my point of order is simple. मेरा सब्सटेंटिव मोशन पिछले 2 हफ्ते से लंबित है। सर, अब इनका मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर, मेरा मोशन तो ले लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सदन के नेताजी और आप या माननीय चेयरमैन साहब बैठक बुला लीजिए, हमको 5 मिनट का समय दे दीजिए, उसके बाद निर्णय करिए। कब तक हम लोग इस बारे में बार बार आपको परेशान करते रहेंगे? मेरी आपसे यही प्रार्थना है। माननीय नकवी साहब तो यहां विराजमान है, कितनी बात अरुण जेटली जी उनकी मानेंगे मुझे इसमें शंका है, लेकिन फिर भी आप ही के अनुरोध पर मैंने सब्सटेंटिव मोशन दिया है। कम से कम अपनी बात का थोड़ा कायम तो रहिए नकवी साहब। आपके कहने से मैंने सब्सटेंटिव मोशन दिया है। सर, एटलीस्ट यू विल प्रोटेक्ट माई इंटरेस्ट। आई एम नॉट आस्किंग फॉर प्रोटेक्टिंग माई इंटरेस्ट, आई एम आस्किंग यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट of the democracy of this country. I am asking in the interest of the people's mandate of Goa, the people's mandate of Manipur, where don't go to the merit now. Denied by these people, and the second largest party, which was defeated by no need to go to the merit of the subject. No need to go to the merit. Yeah, no need to go to the merit. You want to say something? The constitution has been violated. Nakviji, I think Nakvi is reacting to that. They are asking me. Nakviji. To convert that into a short duration discussion. Nakviji, How can a short duration discussion? Nakviji, please. दिग्विजय सिंह जी ने जब ये इश्यू उठाया था तो उस समय मैंने यही कहा था कि आप जो है जो एप्रोप्रिएट उसमें रूल है उसके तहत आप नोटिस दीजिए, उसके बाद तय होगा कि क्या करना है, उसमें चर्चा कब होनी है। एक चीज, दूसरी चीज, ये बार बार हर दिन ये बात उठाना कि साहब जो है वो लीडर ऑफ द हाउस तो रोज आते हैं, आप उनसे बात करिए। तो इसलिए लीडर ऑफ द हाउस कहाँ है आप ये बार बार कहेंगे, तो ये मुझे नहीं लगा। मैं इसलिए जो है वो आपका जो सब्सटेंटिव मोशन है वो सब्सटेंटिव मोशन जो है वो टेक्निकली करेक्ट है नहीं है, वो सारी चीजें एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। Okay, Nakvi ji, you convey to the leader of the house. Yes. You please convey to the leader of the house. Definitely, I will convey. Sir. Yeah, that. Now, Hussain Dalwai ji. Hussain Dalwai. No, that is Kolachesh allowed him. Hussain Dalwai. No, I called Hussain Dalwai. मुझे बोलने दो, आपको देंगे। Hussain Dalwai. Sir. Thank you, sir. No. I asked him to convey to the leader of the house. Sir, Hussain Dalwai. I have directed Parliamentary Affairs Minister to convey
the feelings to the leader of the house. I have done that. No, it is clear. I understood. Be accepted. You accept a He short cannot say duration that. discussion. He cannot say that. Sir, he has suggested to me. No. Sir, He is not to decide that. No. Can I It is already. No, please. That is private conversation between you. No. If I want to level See, charges, it has to be through a sub. Digvijay As per the ji, that is private conversation between you. You need not say that here. That's a suggestion. Sir, it's a suggestion. It's not a directive. It's a suggestion which has come from a host. That is. Friend of mine. Why do you worry about that? Government will the suggestion which is suitable to them. That party. But No. yet, sir, Digvijay ji, sir, I would say. I have already told you. Sir, Sir, Digvijay ji. how long? No. Sir, how long? No, Digvijay ji. Yes. Very relevant point. As per your advice, a motion has been given. And motion is a complaint against the government about its unconstitutional work. Alleged and not it is proof. That motion has been given before the House, please. And admitted. And now it is to be listed someday in the business. It cannot be delayed inordinately only because the government is not responding and not giving the time. The thing has transpired like this. Government can never agree to move a motion of complaint. Yeah. In policy, one of them, they can never agree. But will you leave it to their good wishes? Okay, now. Will you leave to their whims and No. fancies? That is That okay. when they will agree, they will No, please. That is the basic question before the House. Sir, you have to give a ruling. No. That is the basic What is leader of LOP? Honorable Deputy Chairman, sir. Please. Sir, I would like to support Mr. Digvijay Singh ji. We wanted to discuss this issue of Goa and Manipur. So the Honorable Deputy Chairman said that the conduct, and so did the government, that the conduct of the governors cannot be discussed in this House and particularly in a 0 hour. And it was Honorable Chair, the Deputy Chairman, who suggested that if you have to discuss this particular subject, there should be a substantive motion. So, on the advice of the Chair and so... No, I was making the rule position clear. Rule position And clear. So, There is no advice. and on the There is advice... no advice. And on the advice of the government also, they wanted discussion. Government agreed. They wanted discussion, provided this subject is put through a proper motion, and that motion was a substantive motion. Now the motion has come in the form of a substantive motion, and that motion is pending with the chair, and we cannot delay this. Now the session is going to come to end. Now how many working days we are left with? Day after tomorrow, the next month is coming, and we have hardly half a dozen days left to discuss the subject. And this is the urgency of the subject we have already lost. Now they are functioning, two governments are functioning without having the majority. That majority which they have, two governments, it is a manipulated majority. They have not the majority. No, please. The Goa Chief Minister and Manipur Chief Minister are not duly elected by the people. Okay. It's all managed. All right. It's all managed. Stolen everything. Now that... So this has to be discussed in the House. Tamanji, sit down. Now that I have directed... Now please, now that I have directed the Parliamentary Affairs Minister to convey the feeling to the leader of the House, let it be... क्लेम करने तक नहीं गए थे और मैनिपुलेटेड मेजॉरिटी कह रहे हैं। आप कहाँ गए थे वहां पर क्लेम करने? आप कहाँ थे गोवा में उस समय? आपके एमएलए क्या बयान दे रहे हैं आपके बारे में? आपके एमएलए किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? आपको पेपर दिखाए? आपको पेपर दिखाए? स्टेटमेंट मिल रहा है आपको? What is the problem? आपके बारे में आपके एमएलए क्या कह रहे हैं? गवर्नर को जो है क्लेम करने नहीं गए। What is the problem? आपके एमएलए आपको ढूंढ रहे थे। What is the problem?
तो जवाब दिया। लखवी जी आराम कर रहे थे। मैनिपुलेशन में जाती है लखवी जी जनता के जनादेश का अपमान। नो प्लीज ना दिग्विजय जी बैठिए। दिग्विजय जी प्लीज आई विल डील। बैठिए नो आई विल let me solve it. No. They've gone against the No, mandate of the people. let us not go to the merit. The Sarkariya Commission No, Digvijay ji, against the constitution. this is not the time. This is not the time to go to the merit. Majority and Yes, manipulation. Digvijay ji, This is a part please of the resume your seat. Who have Digvijay lost the ji, mandate. Digvijay They ji, voted against you. please resume the seat. This is not, no more. This is not the time to go to the merit of the subject. See, I will repeat what I said. Yes, there is a substantive motion. It has been admitted by the Honorable Chairman. It is admitted. And I have directed the Parliamentary Affairs Minister to convey to the Leader of the House regarding the subject so that we can as early as possible take up the discussion on that. No, Hussain Delvai had called much before. He was on his legs. No. No, this is over. No, not on this subject. Not on this subject. हो गया है Hussain Delvai. जब आप करें मोशन एडमिट हो गया है और मुख्तार अब्बास नकवी साहब जहां बैठे मैं भी बहुत दिन वहां बैठा हूं। ये तरीका होता है कि विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं। ऐसे हमने भी बहुत टाला है। भी ऐसा किया है। जो है कितनी दूर है, हम ये कह रहे हैं लीडर ऑफ हाउस का कमरा कितनी दूर है। और यूपी उत्तराखंड में 8 दिन बाद इन्होंने दावा किया। आपने भी ऐसा किया था। 8 दिन We will do that. That is over. ये जो है ये बहुत जरूरी है कि जो निर्णय आप करिए इसको। That is over. Hussain Delvai, please. Sir. No. That is over. That's over. Sir. No. I already made my point. The chair has said what he has to say. No. Chair has already made it clear. Aap baithiye. Now, Hussain Delvai. Sir. I have not ruled out it. I said there will be discussion. I told the reason also. I said there will be. Now, Digvijay ji, baithiye. I call her. आप लोग बैठिए. Mathur, you sit down there. I said that honorable member, I will call here. I will do that. I know that. You need to teach me. गए 4 दिन से मैं No. This is unfair. 4 दिन से मैं I know. एक गंभीर विषय More than 10 minutes before I called Hussain Delvai on a point of order. Backbenchers are also members with equal rights. I am saying that. Point of order, sir. Therefore, Hussain Delvai, what is your point? Yes. You said a point of order. You are not a गए backbencher. 4-5 दिन से मैं एक गंभीर विषय यहाँ उठाना चाहता था। No point of order. You said point. मेरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। हाँ. ऐसा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने असीमानंद और उनके साथ 7 लोगों को एक्विट किया है। No. This is not point of order. जो लोग क्लास में 3 बार No. That is no point of 3 order. बार मालेगांव No अजमेर point of order. मक्का शरीफ 3 जगह जिन्होंने गड़बड़ी की notice. You इस तरह का ये कर रहे हैं। You give support notice. ये एक तरह से अन्याय है। This is no point of order. उनको You can give याद separate किया नहीं notice. जाता। एक तरह से You इस तरह can- से धर्म के Please. चश्मे से You give एक separate बिल्कुल notice. गलत No point है। of order. और रेलवे साइड के बारे Mrs. Praveen. में हमें डाउट Mrs. Praveen. Yeah. No point of order. You give support. I will come back to you. बहुत बहुत शुक्रिया बोलिए. आपका क्या point of order है? महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। या क्या है? Point of order. मैं औरतों के सम्मान और सम्मान से जुड़े हुए मामले की बात उठाना चाहती हूँ। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी Then you give notice. आप 0 hour पे नोटिस दीजिए. नहीं.
Give our notice. No. मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर किया। नहीं। एक तरफ No, give our notice दीजिए। राजस्थान के एक मंत्री ने एक बच्ची के साथ गलत आपने नोटिस दीजिए। बयानबाजी की है। नोटिस दीजिए। What is विप्लव ठाकुर? What is the matter? विप्लव ठाकुर 11 साल की लड़की का बलात्कार होता है और वो मंत्री इस तरह से बोलता है कि कोई बात नहीं। No point of order. No, sit down. There are no point of order. Give notice. परवीन जी नोटिस दीजिए। बैठिए, नोटिस दीजिए। You give notice. Give notice. Now Sri Sharad Pawar, Sharad Yadav 267. Sharad Yadav 267. Sri Sharad Yadav 267. क्या है? You give notice. Give notice. क्या है? What is your problem? तो नोटिस देना है। अरे उसके लिए नोटिस देना। नो No, without notice I cannot allow. I don't know what it is. No.